Assalamu alaikum. My name is Khushhal Khan, and today, who's joining us? Please introduce yourself. My name is Aamna. And what do you do? I do nothing. I sit home and watch dramas and then I review them. And you review them, and you also interview people. I do. And now the tables have turned. They have. And who's Yeah. interviewing who now? Let's see how long you can keep them turned. Challenge है फिर. Challenge. You like Gen Z जरा ज़्यादा ही अपने आप को seriously लेता है. देख लेते हैं फिर. देख लेते हैं फिर. अच्छा, okay. So where do we start from? ठीक है. I'll start with like the basic questions. Okay. About journalism. Okay. How did you get into it? I started writing when I was 9. My father's a journalist, so it was kind of in my genes. By Writing 17, when I you were was 9? yeah, poems. Poems. Yeah, stories, short stories, Okay, creative writing. Okay. By the time I was 17, I was working Okay. for a newspaper Uh-huh. and for a magazine. Okay. When I was 18, I got selected for an exchange program to Japan Oh. on an article that I had written. So that kind of sealed the deal. Okay. And I've been working ever since. And how did you develop this sort of thing for journalism? I love writing. I You love love writing? writing. I love writing. Hey. And I'm not sure if a lot of people would be able to relate to that. I love writing. जब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था to Good. transition from writing to talking. You Reviews. still write? Do you type? I try to. मेरी कोशिश होती है कि मैं लिख लूं हर वक्त जब मुझे वक्त मिले मैं कुछ बैठ के. And I like to write, not like type. You I like to write. Can you write dialogues? ये है ना कॉपी जिस पे सारे नोट्स बनते हैं. ये मुझे क्योंकि शौक है लिखने का शौक So है. I also have a diary where I write notes and take notes on my scripts and all that. Acha, so can you write like dialogues and stuff? Like if I were to give you a situation, I'm not giving you one right now. Yeah. But like if I were to give you a situation कि ठीक है ये scenario है और ये story है और एक छोटा सा scene दे दूँ आपको और आपने और characters भी दे दूँ और सब कुछ दे दूँ आपने dialogues लिखने हैं. Can you do that? Of course. Good. ये मैं अपने लिए पूछ रहा था. बाद में मेरे काम आए. हाँ, of course. अच्छा ठीक है. हाँ. Okay. What do you think के like you know for actors like or for anybody there's an inspiration कि अच्छा ठीक है. You might get inspired by someone or somebody's work. Who is that for you? That like in journalism? In journalism. Yeah. So because I've always been a fashion journalist, so I read a lot of Suzy Menkes, who used to work for the Vogue. Okay. Very, very seasoned journalist. All right. And then Vanessa Friedman, who writes for New York Times. Yeah. हाँ, घबरा रहे हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा. मैं सुन रहा हूँ. जैसे मैं इसी में से points निकाल रहा हूँ. जैसे ही ब्रेक दोगे ना और उसके बाद मैं रिवर्स वापस कर दूंगी. मेरे पास भी कुछ सवाल हैं. पूछे, आ जाए. नहीं आते रहो चलो. हाँ. ऐसे से tell me ना. क्या? Like क्या था? मतलब यही लोग थे जिससे आप like you were inspired. हाँ, ये अच्छे राइटर्स थे ना जो कि कॉन्टेक्स्ट में लिखते थे, फ्रिवलेस नहीं लिखते थे, सुपरफिशियल राइटिंग नहीं होती थी. Okay. Yeah. Superficial writing नहीं होती थी. नहीं होती थी. Which book inspired you? Which book inspired me? Yeah. Oh, so I really enjoyed The Heart of Darkness. The Heart of Darkness. हाँ. Okay. And I really enjoyed Golding की Lord of Flies. Because Why? मेरा ख्याल है कि इंसान को सिस्टम चाहिए होता है to function. Okay. And that's the difference between wildlife and human life. Okay. That they have systems and there's law and order for human beings जो कि wildlife के लिए नहीं है. Yeah. तो जहाँ वो law and order हट जाता है, Yeah. case in point कराची, Yeah. तो फिर इंसान जो है वो becomes a beast. Yeah. That's it. It was a beautiful book. It was a beautiful book. हाँ. Do you read like any fantasy books like? A lot. Not okay. Which ones? Which is why I enjoyed Terravin so much because I've grown up on Mills and Boone and Sweet Valley High and वो जो होती थी ना उस वक्त की, हर किस्म की किताबें पढ़ी हैं. Are you more like a romantic person or like very romantic person? You like romantic? Like, do you like watching romantic movies and love dramas them, and shows and all love that? them. Yeah. फिर तो मोहब्बत तुमसे बहुत पसंद होगा. बहुत अच्छा लगता है. हाँ. Watch it. Yeah. Watch it. हाँ. एक सवाल वापस मारूं. क्या आजकल की जेनजी वाकई इस तरह प्यार करती है? मेरे तो ख्याल है this is now a feeling of the past times. अब कौन ऐसे मोहब्बत करता है? पहली मोहब्बत में ऐसा होता है. There are a lot of cases that what do you, like you're talking about like their behavior, the way they do. ये मतलब इतना टूट के मोहब्बत करना कि क्या अब होता है आजकल तो लगता है यार बच्चे बहुत कैलकुलेटेड हो गए हैं अब कि ये सही है हमारे लिए, ये टिक्स द बॉक्सेस, ये टिक 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 ठीक है, ये अच्छी एक प्रोपोजिशन है, इससे मोहब्बत कर लो. लेकिन देखिए 5 उंगली तो एक जैसी नहीं होती ना. Like different kind of people in different places. यहाँ की सोसाइटी अलग है. नहीं डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है. नहीं मैं डिफेंसिव नहीं.
डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, सीधा सा सवाल है क्या ऐसे बच्चे आजकल जेनजीज जो हैं ये करते हैं बिकॉज़ हाँ। मैं बता रहा हूँ ना कि जो एनवायरनमेंट होता है ना उसका भी बहुत बड़ा असर होता है. ठीक है डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट you're growing up in. ठीक है, so I think कि मैंने लोग देखे हैं ऐसे जो ऐसे रिएक्ट करते हैं जो कि इतने शदीद और इतने इंटेंस मतलब इंटेंसली इन्वॉल्व हो जाते हैं इस चीज में. So नहीं, again tables have turned. मैंने No. कहा ना ये तो होता रहेगा ये तो मैं ठीक है it's okay, it's a ठीक part है, of it. See, हाँ, एक आप पूछे दो मैं पूछूंगा. हाँ, अच्छा, so another question. You have good hair, mashallah. I What do you do. do for it? nothing Like, to maintain it? nothing, it's genetic. Genetic, हाँ, all of it. all of it, all the hair is genetic. नहीं आधे बाल जो है वो genetic नहीं है, आधे genetic, you know, it's genes. My अच्छा. mother has great hair. Like, do you take care of it? Like, I'm just asking, like, No, you know, how you oil no, and I stuff. no You don't no do that? no. I get a blow dry twice a week, and I do not oil it. अभी मैंने कलर भी चेंज कराया तो ताबिश कहने पे वो उसने बाल डैमेज कर दिए हैं, लेकिन वो अच्छा. hopefully it'll grow out. But no, my mother had really long and really it's in the family. You just flexing your genetics. है. पंजाबी ये भी कह फैमिली रहा है कि मेरे बाल हाँ अच्छे भाई हैं. पंजाबी Fit है. फैमिली है, बीच में गिरे लेकिन वो वापस आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बढ़ रहे हैं ना आगे से. But no, it's in the genes. We were in Jeddah for 3 years and I went with a boycott. I came back with hair that was down You to had my a boycott? knees. I had a boycott Oh. when I was like 12. Wait, नहीं, have 9. you posted a picture of it? Like बचपन में था ना, टाइम नहीं था Instagram पे माँ बाप post के पास. मैं कहा इसके बाल को भी काट दो उड़ा दो. या उड़ा दो. तो वो अच्छा. जब बड़े तो 3 साल में they were down to my knees. अच्छा. हाँ तो वो बहुत माशाल्लाह. ग्रोथ भी बहुत रैपिड है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह थैंक यू अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लाख शुक्र है. Which is good, हाँ. माशाल्लाह. हाँ. माशाल्लाह बोल दो. हाँ. बुढ़ने से Yeah, बचा. what did you do to your hair? You dyed them yellow. क्या हुआ? वापस कर दिए brown? Black. Black. Like Black that. में खुद dark हो गए brown. थे. I have खुद मेरे पीले हो गए थे बाल. naturally blonde hair है, मैं black करता था. ओह ये तो पता ही नहीं किसी को ये well It's आज रिवील हो रहा है ये. Now you know. हाँ. अभी नहीं छुपा सकता था ना. नहीं छुपा सकते. I couldn't like do it again and again. So I was like, you know what, the world. लोगों ने needs कहा to ये know. क्या करें यार, we can't क्या cast you with the blonde hair. With the blonde. No, actually, फिर वो हाँ. It was an acid yellow. I didn't know कि naturally ये color होता Naturally है. blonde निकल गया था. It was like blonde. Blonde. Yeah, when I was born, I had like a head full of blonde hair. और मैं बचपन से ही कलर करता था. I never used to like my blonde hair. I like the heterochroma happening. ना eyebrows black, बाल blonde. It was genetics. अम्मी 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 blonde होंगी, अब्बू के black होंगे, वो mix होके black and blonde अब्बू के हो गए. actually थोड़े से ना वो blondish सी vibe आती है उनकी. He has like grey and like थोड़ा सा blue का shade उनकी आंखों में, और दादी की जो है तो green आंखें, दादा की जो है तो grey थी. मतलब black और brown तो थे ही नहीं ना किसी के. अम्मी के थे. अम्मी has like dark brown eyes. Right. But I have like some people call it like bipolar eyes or something like that because There's no such thing as bipolar eyes. My cat has heterochroma, एक हरे रंग की और एक नीले नहीं रंग वो वाले नहीं ना. So like see like they're dark brown right now. I Okay, don't know yeah. if they're dark No, brown. they're or dark something. brown. Yeah. Outside they're gonna be light brown. Hmm. Around like green stuff, you can see a green Green. of it. Like I might have a picture. I'll show it. to you. गिरगिट की तरह. हाँ, but that's the only green. हाँ, yeah, green and हाँ. bluish हल्का I सा. hope personality trait नहीं है ये. आंखों में. सिर्फ आंखों में. आंखों में. Very nice. हाँ. It's all in the eyes. All in the eyes. अच्छा. मुश्किल सवाल नहीं पूछने मेरे से कोई. मुश्किल सवाल नहीं पूछे. नहीं, ये क्या आराम अच्छा. child's play. अच्छा, no, I wanna learn a thing or two as well. हाँ. See, so because हाँ कि अच्छा मुश्किल सवाल भी पूछूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ अच्छा पहले ये बता कि ये सवाल मेरे ज़हन में कि अभी जो एक्टर्स आ रहे हैं और जो मतलब इंडस्ट्री में जो ऑडिशन हो रही है, बहुत सारी चीजों की हो रही है, एक्टिंग की भी हो रही है, स्टोरी टेलिंग की भी हो रही है, डायरेक्टर्स की भी हो रही है, राइटर्स की भी हो रही है, राइट? बट डू यू थिंक कि दिस न्यू जनरेशन, राइट, कैन ब्रिंग अ चेंज? Absolutely. Is it bringing a change? Not happening? yet. Do you see Change it? doesn't happen overnight. But I do think that they Do you will not bring- see the change happening, like in general? I do. I see the shift. I see the shift for sure. I think the new generation is more confident in who they are, especially the Gen Zs and you है ना social media वाले बच्चे जो TV में आ रहे हैं अब. They're more confident with who they are and they're not so much answerable to their fans as the previous generation was. Okay. वो लोग बहुत guarded थे, बहुत ज़्यादा. उनकी बड़ी डबल लाइव्स चलती थी कि वैसे कुछ आगे कुछ. अब वाले जो बच्चे हैं लाइक दिस इज हू वी आर एंड बिकॉज उनकी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पे चल रही है. they're living their life and so everybody knows.
कि वो पार्टी भी Some कर of रहे हैं, them, ट्रैवल भी yeah, कर रहे some of हैं. them have it on social media, some of them don't. Yeah, but I'm talking about the ones who do. Yeah, so like, what's the difference between these two? This generation. Between what? Some of them are on social media a lot, हाँ. and I think it's a requirement, no? I'm not saying it's a Yeah. कोई और गलत बात नहीं है, of course, like it's हाँ, work and हाँ. it's a part of it. हाँ. But what if somebody can't manage to Social be media. socially They that won't make it that big today. socially, No, professionally. professionally? हाँ. Won't make it that big, na? If you're not on social media, that If you don't have a following. if you don't have a following, okay, that's different. Yeah. That's you don't have a different following. than तो following social media पे निकलती है ना. और लोग तो सिनेमा तो जा नहीं रहे. How do you gauge following? खींच के लाने ना लेकिन लोगों को भी सिनेमा में. यार क्या That's the- multiplexes no. में आ जाते हैं लोग. When They are you have to doing do- your first film? When am I doing my first हाँ. film? My first film, I'm waiting on it to like just like edit हो जाए, सही से हो जाए. कर लिया है. कर लिए ना? We've shot it. कब आ रही है? Last year we've shot it. But I don't know when it's coming out. आई तो नहीं है ना? ऐसे तो नहीं. नहीं कि मैंने कुछ मिस कर दिया. नहीं आएगी तो पता लग. हाँ. आएगी तो पता चला. हाँ. कितना वो आंसर था ना. हाँ. लेकिन क्या कहते हैं, no, it's going to be a fun film though. Hmm. It's a very commercial, very funny, I think, Hmm. film, and I hope it turns out nice. Hmm. बहुत पहले की थी, Hmm. बहुत पहले की थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है. So let's fingers crossed. Let's hope. नहीं, अच्छा, हाँ. what do you know about acting? That's it. ठीक है, because मैं What अपना do I know point- about acting? हाँ, ये बड़ा कोई loaded सवाल है. कोई देखो. loaded सवाल है, हाँ. लेकिन मुझे इसलिए जानना है because see, like you can judge the actors, right? हाँ. Like on a screen and based on their acting and all that. But like आपको एक scene for instance पसंद नहीं आया, Hmm. और वो जो है तो उसके पीछे एक justification है पूरी, Hmm. but you don't know that. Hmm. So like, do you think like when you pass a comment or when you say something, when you judge it like अच्छा ठीक है मैं ये देख रही हूँ, so how कह like, दो क्या कह दिया अपने रिव्यू में? नहीं कुछ कहा, नहीं कुछ कहा, कहा, नहीं कुछ कहा. see, this is something that like I want to know from people, like for example like, Okay, so the thing if- is that acting. Every character has an arc. It's supposed to have an arc, yeah, right? It's Yeah. supposed to. Even if it's flat, there is a process that a character goes through from the beginning of a story to the end of a story. okay, ठीक है? yeah, बेशक वो एक रात की स्टोरी हो, बेशक वो 5 मिनट की स्टोरी हो. अगर एक आपको राइटर 5 मिनट की स्टोरी दे रहा है या एक रात की स्टोरी दे रहा है, उसमें भी वो एक्टर जो है वो एक जगह से शुरू करेगा और एक जगह खत्म होगा. बिगिनिंग और एंड तो होगी ना स्टोरी जी, की. जी, अगर एक कहानी बताई जा रही है, of course, उसका मिडल भी होगा, बिल्कुल, प्लॉट भी होगा, yes, उसका क्लाइमैक्स भी होगा, है ना, और एक कंक्लूजन भी होगा. yeah, उसको उस कहानी को उस एक्टर ने कन्वे करना है. okay, अब उस एक्टर, अब जाहिर बात है उस इंसान की कहानी जो है वो उस दिन से पहले भी होगी, उस दिन के बाद भी होगी. yes, उस एक्टर को पता है कि उसकी कहानी क्या है, yes, देखने वाले को नहीं पता. exactly, मगर क्या वो एक्टर उस एक रात की कहानी में कन्वे कर सकता है कहानी और समझा सकता है देखने वाले को कि वो कौन है? Hmm. That's a good actor. That's a good actor. Yeah. That means he's gotten into the character and he's doing it But for properly, that right? he needs to have a good script and a good story. For a good script, Right? story. अगर वो कैरेक्टर जो है उसका आर्क ही सारा लॉपसाइडेड है, क्रेजी सा है कि आज वो कुछ कर रहा है, कल कुछ कर रहा है, तो समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है. What's your favorite Pakistani film? Favorite Pakistani film? Yeah, up until now. I mean, I'd say Maula Jat, but that would be a really big cliche. But I think the best Pakistani film I've seen in a long time would be Maula Jat. But no, my best Pakistani film has to be Khuda Ke Liye. Khuda ke liye. Oh my God. Oh yes. Okay. Oh my God. Okay. Yeah. No, But you're in Barzakh. I'm in Barzakh. यार ये क्या तस्वीर लगाई? कौन सी वाली? ये जो लगाई थी कौन सी वाली? अपने Instagram पे हाफ न्यूड जो लगाई थी, जरा चला देना यार. तौबा, नहीं कब लगाई थी मैंने? लगाई, अब लगी हुई है, जिसपे लोगों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह खुशहाल खान ये क्या कर रहे हो, तो अब नहीं, मतलब वो भी करना है. लगाई थी. लगाई थी. लगाई थी. हाँ, नहीं ऑब्वियसली लगी हुई है, क्या मतलब है लगाई थी? हाँ हाँ लगी हाँ, हुई तो है, क्या लगाई सोच के लगाई थी? क्या सोच के लगाई थी? वो उन्होंने लगाई थी. They were like it's a collaboration thing and all that. You didn't know कि लग गई जो on your page एकदम. नहीं मुझे पता था लगी है. मैंने लगाई थी. हाँ. It was just a whole story behind it. Like right now I think it's too soon to see कि अच्छा क्या हो रहा है क्या नहीं है. लेकिन हाँ लगाई थी. नहीं लगाई है, लगी भी है, लगी है. हाँ. लगाई थी अभी तक है. हाँ. But like you know बड़े उस पे लोगों ने तोबा तोबा की हुई है. It's a still of एक frame है उसका still लिया हुआ है तो उन्होंने वही वो किया हुआ है. So नहीं, like what about it though? जाहिर बात है तो हाँ. Instagram पे जो तस्वीर होगी वो स्टिल ही होगा ना. हाँ.
It can be also video. It could be. It could be a it reel could as be a well. reel, a video, or हाँ, anything. हाँ, हाँ. Like, what about it though? What about हाँ? the picture? नहीं पूछ रही हूँ क्या सोच के लगाई थी, कपड़े तो नहीं पहने हुए उसमें, कपड़े पहने हुए? पहने हुए नजर नहीं आ रहे, वो स्किन से मर्ज हो रहे. अच्छा जैसे बाल मर्ज हो गए बाल मर्ज हो गए थे अभी स्किन के साथ. लेकिन क्या कहते हैं, I'm excited for Barzakh. है ना? So am I. I'm excited to see Yeah. like what we've done now. Like I Yeah. know what we've done, but I haven't Yeah. seen it like that. Yeah. You know, this one time The story when we were sounds shooting. really strange and fun. How do you know about the story? Do you know about the story? I mean जितनी इन्होंने रिवील की भी है. अच्छा. हाँ. हाँ. यार फवाद खान, सनम सईद, superb actors दोनों. You're asking ना अच्छे actors कौन है? ये दोनों अच्छे actors हैं. दोनों. माशाल्लाह से. माशाल्लाह से जबरदस्त like actors हैं. You're a good actor. You're a good actor. You get into the skin of a character. अभी तक मैंने जितना काम देखे हैं. I tried. Skin being the operative word for Barzakh right now. See what she did there. That was nice. Yeah. हमने जो Barzakh में था ना, that was like a life-changing experience in a way. One of those experiences, you know, like where I became like a little obsessed with acting because I just started shooting for Issa Mehrbano ka in the start. तो फिर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था. फिर they were like constantly calling, and then I think I spoke to Zubia, who was the ED on set, right? And then उसने कोई महीने बाद मुझे कॉल की. She's like, listen, let me speak to the team. You go for audition, just get the audition done. उसने properly डांटा. उसके बाद फिर मैं गया audition के लिए. I just went there because they told me there are going to be snacks there. मैं चला गया. मैं कहा चलो snacks, I'm bored. Snacks के लिए गए? I went for snacks. Good. Because क्या थे snacks? Sandwiches. Okay. Mayonnaise, chicken spread. I like chicken spread. ठीक है. मूड था. घर का बना हुआ या जो बोतल में? घर का था. मैं लाहौर में था और मैं बोर था, घर पे था और they called me like ग्राउंड ऑडिशन दे दे तो फिट होगा. मैं कहा ओके दे देता हूँ, क्या जाएगा. And then I was on the set and someone was speaking. Qasim's doing this and Falafel is in it. And I'm like, I called Zubia. I'm like, BHA, क्या सीन है? मैंने कहा ये है कि नहीं है, ये सीन हो रहा है कि नहीं. She's like, I can't confirm, not deny. I'm like, done. Who do you think? Who's your favorite actor in the new generation? मैं खुद को निकाल रहा हूँ. You? No, मैं खुद को निकाल नहीं. वो पता था मुझे, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ. No, I really like Hakan as well. I think he's got a lot of potential. Yeah. और जितने वो roles कर रहा है, they're both. Although College Gate I couldn't follow after the third, fourth episode, I found it very, very gratuitous and very sort of pretentious, and मुझे लगा कि मैं नहीं connect कर सकती इन बच्चों के साथ बिल्कुल भी. तो मैं नहीं देख पाई. लेकिन मुझे उसकी acting, उसका character अच्छा था. Even in Yuhi, I think he's good. Give me names. New generation और कौन है? I think Komal Mir. So Komal के मैंने Jio के एक दो ड्रामे हैं उनके उसके देखे. बादशाह बेगम was good. She's also done. She's good. But I can't say anything about her acting yet. अच्छा. I just think she's a very Barbie doll kind of a figure, you know. She looks very pretty. She's a good actor. अच्छी करती है. बहुत अच्छी. I wanted to watch the Ramzan play, but there was too much happening at that time. मैं देख नहीं सकी. Where's she? She was very good in that. हाँ, she was with you in Veshi. तभी मैंने बोला. हाँ. ठीक है. मैं तो अपनी प्रमोशन. तभी इसीलिए बोला या कुछ और वजह है बोलने की? नहीं. अच्छा. She's a good actress. और कौन है? मुझे पूछ रहे हो, खुद बता रहे हो? I'm asking. You're asking me. You told me to give you names. हाँ. You give Okay, with the young girls, I feel, and this goes for Komal and a lot of young girls that I see, I think there's too much pressure on how they look on camera. I'm not seeing natural acting coming in this new generation of female actors. Okay. I feel there's a lot of focus on how they're looking, that they need to look pretty and dress pretty and all of that. And natural, मुझे बता दो कौन है. For example, like amongst the boys, I've seen you letting your guard down. I've seen Ashir Wajahat letting his guard down completely. John B. Right? He's completely, he can. Hakan, I feel he hasn't till now, but मुझे लगता है वो कर देगा. Okay. So the boys are a bit more confident, and you know they're experimenting in different roles. लड़कियों में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा pressure है. They have to look pretty all the time. वरना मुझे बताओ कौन लड़कियां हैं who've done something that is odd, an odd role amongst the new generation. Okay. Understandable. Huh. There are people who've done it, but like... Has it made a mark? Yeah, has it Who even has done it? Rumesa is good.
Ramesa is good. Ramesa is was good. good in John. Yeah, absolutely. Ramesa was good in John. Ramesa was even good on the Ramzan play. So is there an interview that you haven't done that you would want to do? Yeah, for sure. Aajkal I want to interview Tom Cruise. Tom Cruise. Right now. Only because Mission Impossible was so good. Okay. But What would you ask him? Huh? Yeah, how does he do it at this age? It's just amazing. What drives him? He's answered all these questions. The problem with the seasoned actor is that they've answered all the questions. Yeah. You know, they've done it all. Yeah. And सब कुछ उनको पूछ लिया गया है, सब कुछ के बारे में वो बात कर चुके हैं, which was a big dilemma when I was interviewing Shah Rukh Khan. I was like, मैं क्या पूछूंगी, which he hasn't been asked before. So then we sat down and we talked about him being the mother in the house. Okay. हाँ, on his maternal instincts. फिर पूरा इंटरव्यू इस चीज के बारे में था कि वो ज्यादा माँ है. मैंने कोई हटके तो बंदा पूछे ना. Yeah, exactly. But Salman Khan, I would like to. Okay. At some point. Pakistan, mein who have I not interviewed that I would really want to interview? Done it all. The cricketers. The cricketers. Babar bhai. Huh. I want to profile Babar Azam. Okay. I really want to interview the youngsters. Okay, you haven't. Musicians, no. Musicians and cricketers. Entertainment में से तो सबको कर लिया है. Okay. Shoaib Mansoor देते नहीं है interview, वरना I would want to interview him, but he doesn't give interviews. मैंने कहा जब मेरे पास कुछ Directors? You've interviewed directors? No? I mean, Kashif Nisar का Hassan ने कर लिया था. It was a really good interview. Otherwise, I would have loved to. Okay. But Not. Yeah. नहीं अच्छा ठीक है सही है. No. Actors का हो जाएगा ये सही है. Actors को सब पता होता है. Actors नहीं यार. I mean, I like interviewing people who have like fun stuff to share. Do you think this is fun? What? Interview. It's going good. This one? Yeah. You tell me. You're the interviewer. I'm the interviewer. Yeah. I'm interviewing you. हाँ, You tell me, exactly. Are You you tell me. comfortable in my space? Oh, and you're okay. Yeah. Are you I comfortable? am. Are you having fun so मैं far? भूल जाती हूँ चाय कभी पानी कुछ? नहीं बहुत शुक्रिया आपका. अपना घर समझें. अपना घर समझें please. जी. Oh. Yeah. तो वो अच्छे लगते हैं फायरी वाले जो इंटरव्यूज होते हैं ना जिसमें कंट्रोवर्शियल हो, अच्छा जिसमें लोगों के ओपिनियंस हो. मैं तो सेम नॉट कंट्रोवर्शियल, नॉट की हेडलाइंस बने, जिसमें लोगों के ओपिनियंस हो. अच्छा. हाँ. You want to know. I don't like it. डिप्लोमेटिक. हर बंदा डिप्लोमेटिक कह रहा है कि मैं तो ये करता हूँ, मैं घर जाके ये खाना खाता हूँ और वेजिटेरियन हूँ और हफ्ते में एक दफा मैं चीनी खाती हूँ वीकेंड को सिर्फ. अच्छा. Do you think people stand up for what's right and what's wrong in this industry? No. Personally, अच्छा चले एक तो आपने आंसर दे दिया publicly. They don't stand up for what's right and what's wrong. Do you think you might know people from the industry, a lot of people, like personally as well. Yeah. Do you think they stand up for what's right and what's wrong in their lives, like not in front of the public? No. But in their personal lives? No, they don't. No. Do you think people have integrity? Yeah, to some extent. Why do you think that they can't stand up, or they don't stand up? Because the stakes are too high. What do you mean? Matlab, if they stand up for what they believe in, and the higher ups don't stand up for that. Right and wrong. Like what? What they believe in can be wrong, can also be right. But like the thing that is genuinely right and wrong. No. Society माशरे में गलत हो रहा है. They don't. People don't. Why don't they? Why don't they? I'm just asking your opinion. Like, you must have thought about it. I have not seen. Reason हो सकता है. Khushhal, I have not seen many people being expressive about their opinions in this industry. That's the thing. I think people are scared. Yeah. Of who? They're scared of being ostracized. They're scared of being victimized. मतलब कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बताया होगा कि यार हरासमेंट हुई है उनके साथ या पावर प्ले होता है ड्रामों के सेट्स पे, ये वो मिसट्रीटमेंट होती है, मगर वो कहती है यार हम बोल नहीं सकते. अभी महीने का साल का एक प्रोजेक्ट मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा. Think about those who have left the industry. They have left because of this reason. बहुत ही वो आंसर है, लेकिन आप मांगते किस वल्लाह से मांगते हो ना at the end of the day. हाँ, लेकिन I mean, it's something that I personally believe in. So मैं वो एक अपना point of view share कर रहा हूँ in a way कि like scared of this कि अच्छा ठीक है एक काम मिल रहा है फिर नहीं मिलेगा. काम तो शुरू से मतलब अल्लाह ही दे रहा है, सबको दे रहा है, जरिया लोग बनते हैं. Instead of asking the person for work
in any field, right? जैसे मैं इस बंदे से मांग रहा हूँ, उसके पास बहुत है, इस बंदे को जिसने दिया आप उससे डायरेक्टली अगर लेकिन मांग बुराई लो, तो बहुत है ना दुनिया लेकिन में। तो हम इस चीज में फंसे हुए हैं। आपको नहीं लेकिन लगता है कि ना, हम, लेकिन यार मैं इससे मांगूंगा, दुनिया इसके में पास बुराई है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इस वक्त बहुत ज्यादा बुराई है। लेकिन अच्छाई भी तो है ना, है, मतलब there is good है। in people, like you know, like Yeah. there are people like that कि अच्छा with integrity, would like who stand by what they say, what's right and what's wrong. Protection for the artist, but like अच्छा मुझे हुई है, हाँ, I've heard about that. Yeah. But the thing is कि मतलब talking about कि जैसे ये harassment की जो बात हुई है, ऐसी चीजें जो होती है, so you know like it's like very blood-borne. ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है हरासमेंट वाला, बिकॉज Because आपको you गवाह know- नहीं है यार, किसने देखा? नहीं, गवाह नहीं है, पहली किसने बात देखा, है। who to believe, who not to believe, what is happening, what's the reality, सच्चाई क्या है मतलब इसमें, लेकिन but when you see it Yeah. and you feel it, Yeah. you know some there are things when you just like kind of like आपको एक vibe आती है कि यार ये कुछ गलत हो रहा है, पावर प्ले है ना बोल सारी। दे। हाँ नहीं, हाँ, लेकिन लेकिन वो वो बंदा भी चाहता है कि नहीं चाहता बोलना, हो सकता है आप नहीं, बोलें। बोलना मतलब ये नहीं कि पब्लिकली सब कुछ हाँ। हैंडल किया जाए, मैं तो इस चीज को पब्लिकली पर्सनली बात कर रहा हूँ, पर्सनली भी हैंडल कर सकता हूँ। If you can help, absolutely. Yeah, of course, Yeah. of course. If you can help, absolutely, especially for friends and I people. feel like everybody should. इस मामले में डरना नहीं चाहिए किसी से, because जितना आप डरेंगे suppress होंगे ना, उतना Absolutely. you're gonna be like, Yeah. you're gonna be weak, man. यार आपके अपने लिए You're gonna principles build बड़े people strong around होने you. चाहिए. Exactly. People should be able to trust you. You need strong people around Yeah, you. absolutely. Strong mentality. Absolutely. Who stands by what they say and what they do. Who genuinely do. ऐसा नहीं कि फेंक रहे होते हैं. नहीं. ऐसे लोग मुश्किल से मिलते हैं. But I feel like you need those people. Yeah, Do you have those people around you? Yeah, absolutely. Are you friends? My friends. Your friends and family? So yeah, I've got like childhood friends. Childhood friends. Yeah, rocks, absolute rocks. Yeah. Yeah. Still in touch with? Yeah. Almost. Have you made any friends recently? I mean, yeah. As recent as like 10 years ago. As recent as like my oldest friend would be from school. Okay. So that's when we were in grade 8, which is like, how old is one on grade 8? 14 साल का होता है 8वीं जमात में, या 12 साल? नहीं, grade 8 हाँ 10-12 का 10-12 का। So 10 का भी हो सकता है, ज्यादा 10, चलो 10 लगा लो, 12 लगा लो, 11 कर लेते बीच में, चलो 11 कर लो, 11 कर लो। So I am turning 50 next year. Mashallah se. So that makes it a 39-year friendship. How does that make you feel? Sorry, I'm stuck at 50. Mashallah se. It's a good thing. First time. Yeah, next year 50. So that's like 39-year-old friendship. 39-year-old. That's a part of a family now. Totally. है ना? Totally. So, even better than some family. दोस्तों की हाँ, I get that. You get that, right? I get that. Yeah. दोस्त यार वही रहते हैं ना जिनको आप चाहते हैं कि रहें। cousins हैं ऐसे कि मतलब जिनके साथ मतलब रिश्तेदार जिनके साथ अच्छी दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड्स वाली। या नहीं बेस्ट फ्रेंड, साइड अब्बू की साइड। हाँ नहीं अम्मी की साइड। अम्मी की साइड मेरे दोनों तरफ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों तरफ अच्छे। नहीं अम्मी की साइड, अम्मी की साइड से जो है तो मतलब किस तरह की मतलब लाइक या सिस्टरहुड 39 अच्छा सिस्टरहुड हाँ सिस्टरहुड है। इंसान अलग से बिहेव करता है लेकिन जो दोस्तों वाली बात है ना वो दोस्तों के साथ मतलब वो अलग ही चीज है। हाँ Now the information comes to you, do you get it, do you ask for it, how is it? No, the information comes to us now. The information comes to us most of the times. मगर there are a lot of like on off camera private conversations जिसमें आपको चीजें पता होती हैं, वो आप कभी उनके बारे में बात नहीं कर सकते। So with time it becomes more and more difficult to be a journalist. Yeah, if you've been long enough. That's why जो नए लोग आते हैं ना उनको ज़्यादा मजा आता है because उनकी वो inhibitions नहीं होती, दोस्तियाँ नहीं होती, relationships नहीं होती. They say it as they see it. Do you think होनी चाहिए दोस्ती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. You're keeping a lot of secrets of the industry that a lot of people don't know. है ना? Yeah. So much. Of course. Which is how it is anywhere in the world. कितना मजे का सवाल पूछा है। हाँ. ऐसे लोग सोच में पड़ जाएंगे ना क्या नहीं सब कुछ सबके बारे में सब कुछ पता है। पहले तो मैंने अम्मी पूछी क्या पता तुम्हें बेटा? कहूँगा मुझे थोड़ी पता है, उनको पता है। उनको पता है, मुझे थोड़ी पता है। बट खैर क्या कहते हैं? Probably उतना नहीं पता जितना आप लोगों को पता है। Who in the industry, of course you know things as well.
I don't think I know you. I think you would know more. Over a period of time, sure. Yeah. It also is like about like if you want to know. बड़ा मुश्किल हो जाता है पता है खुशहाल. The thing is that and this is interesting because the more you know people, आपको उनका लिहाज करना पड़ता है. जी मैं तो लिहाज तो करना चाहिए हर हालत में. यार कभी कभी परफॉर्मेंस देख के लिहाज करने को दिल नहीं करता, इतनी बुरी होती है जी. तो आपका दिल चाहता है आप कह दें कि ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, मगर आप नहीं कह पाते बिकॉज आपने कल को you don't say anything about it, right? Okay, of course, then with time and especially after being an editor, then you take that stance कि यार अगर कुछ चीज बहुत बुरी है इतनी कि आप कहें कि ये बहुत ही बुरी है तो just don't talk about it. Don't talk about it. Take that stance. But if it's good, then you say it's great. You know. Yeah. And do you think it's hard to survive like in this industry, like जिनका कोई बैकग्राउंड ना हो यहाँ पे जो भी हो any new हो and they're like seeing all of this like everything it's not bad, it's very good this industry. इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें like मुझे लगता है कि लोगों का perception ये है any industry is tough, right? हाँ every industry any industry is tough. लेकिन लोगों को ये होता है कि ये बस बहुत ही गंदी बहुत ही ज़्यादा नहीं ऐसी बात नहीं है. नहीं I don't think that. नहीं बहुत सारे अच्छे लोग हैं इसमें. Of course you're friends with them, you know them. Yeah, I try not to make friends in the industry. It's a good thing to do. No, I try not to. I don't like fraternizing. Yeah. I don't like going to like birthday. You have your circle. You have your own circle. I have my friends. You have your friends. I have my family friends. And although there are a lot of people that I have huge respect for, वो बुलाएं तो मैं जरूर जाती हूँ, but जो है ना दोस्तियाँ वो नहीं काम करती हैं. यार आप कल को बुरा रिव्यू देंगे आपकी दोस्ती इफेक्ट होगी. Would you like some mango milkshake? No, nothing. Seriously, I can't have it in the morning. I have like my first meal at like what, like 3, and then last is at like 8. So I don't eat after 8. उसके बीच में मैं खा लेता हूँ. Oh, well, that's really good. That's good. I like it. Like that. I'm more active and I work more. My brain works more like that while working. Right now I'm a little like काम के लिहाज से occupied. Haven't slept. You can I think see by my face. हाँ, but kebab is protein. You should eat. उसमें नींद थोड़ी आएगी. Appetite बहुत खराब है. क्यों? नहीं I have one meal a day. I want to have more meals. कल रात को खाया दुम्बा, शाम को खाया. अच्छा एक तो देखो दुम्बे में ना प्लीज मसाले मत डाला करो इतने ज़्यादा. एक टमाटर ही. Don't you agree? You think that restaurant वाले देख रहे हैं जो भी देख रहे हैं मतलब मसाले ना डालें ना मतलब. हाँ यार दुम्बे की कढ़ाई होती है ना उसमें नमक होती है. हाँ हरी मिर्च होती है, हरे मसाले होते हैं. हाँ उसमें लाल मिर्च नहीं होती बिल्कुल. आप गरम मसाला बिल्कुल नहीं होता. तुम लाल दुम्बा ले आया पूरा लाल. ओए ओए है लेकिन खा लिया फिर भी मजा तो आया. दुम्बा बहुत गोश्त होता है ना. अल्हम्दुलिल्लाह काफी दिन से नहीं खाया था. वीकनेस हो रही थी मुझे. सर दर्द हो रहा था, डिप्रेशन हो रहा था. मैं कहा दुम्बा खाता. लेकिन दुम्बा खाया बस वो था कि वो फर्स्ट में बोलते ना कि क्या बोलते हैं अरवा योगीदा अरवा पड़ाशवा वो जो एक नीड होती है बस वो पूरी हो गई थी छोटी सी. लेकिन एपेटाइट की बात हो रही थी. देखिए मैं कितना घूम करके बात करता हूँ ना. मैं एक चीज पे बात कर ही नहीं सकता. ये मेरा मसला है. अच्छी बात है. ये बहुत अच्छी बात नहीं है. ये बहुत अनोइंग चीज है. इसलिए मैं इंटरव्यू आपको पता है मुझे बोलते हैं ना कि मैं इधर उधर हो जाता हूँ. हमने कि नहीं यार वो छोड़ दो. नहीं देते हुए भी हो जाते हो, लेते हुए भी हो जाते हो उधर उधर. ये कमाल है. कमाल दोनों में. I can't help it ना. हाँ ये दिस हुआ है. पंदा है तो रख दो, नहीं आया तो चलो. बिल्कुल सही है. लेकिन क्या कहते हैं एपेटाइट. तो पहले तो वो लाल दुम्बा उसने जो है तो मैं आधा किलो खाया और यूजुअली आई कैन हैव लाइक a kilo. ओके ऑफ इट. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके माशाल्लाह. रोटी के साथ, नान के साथ, अफगानी रोटी, तंदूरी रोटी जो होती है, कंदहारी नान जो होता है. हाँ या बड़े वाला चपेट की तरह जो लगेगा ऐसे लाते हो ऐसे. हाँ. 2 बंदे पकड़ के हाँ रख देते हैं काट के. एग्जैजरेट करके बोला लेकिन हाँ खैर तो उसके साथ खाते. ठीक है. यहाँ पे वो चीज थी मुझे नहीं मिलती. अलासिफ पे मिलती है. अलासिफ पे हम जाते बाइक वो रात को हम जाते हैं शार्ट हो जाते हैं. कभी इकट्ठे चलेंगे. मैं नहीं गई कभी कसम से. बहुत मजे की जगह. तो बस चलते हैं. मैं हसन भाई को ले जाता था. हां. Oh, Hassan would love it. Oh, done. Now you said it. हाँ done. She's gonna make a plan now. हाँ. अच्छा बट खैर अब क्या एपेटाइट की बात हो रही है. हाँ. तो कल मुझे खा ही नहीं गया. क्यों? बिकॉज़ वो लाल मिर्च नहीं डाली. क्या हो गया? नहीं दुबई की यहाँ पे कराची से जब से आया हूँ खाना नहीं खाया जा रहा था सही से. कराची मार देता है एपेटाइट. नो मीट इज गुड. ठीक है. इट्स माय ओपिनियन. प्रोटीन तो जरूरी है. अब मेरा दुम्बा खाने को दिल चाह रहा है. दुम्बे की कढ़ाई, गरम रोटी. चक्कर लगेगा. हाँ लगा लेते हैं. मैं मजाक नहीं कर रहा. लगा लेते हैं यार. एक दुम्बा वो प्लान करे पूरा. चर्सी पे नहीं. चर्सी इज गुड. हाँ. हैदराबाद कारखाने ना. आपने खाने? नहीं प्लीज. शर्मा मत. नहीं प्लीज नहीं.
मैं खा लूं, अपना घर समझे। मैं शर्मा हाँ नहीं और भी हैं अपना ही समझे। हाँ नहीं कारखाने से थोड़ा सा आगे जो है तो इलाका खैर है, हाँ वहां पे मिलते दुम्बे, कोई बंदा जाए वहां पे दुम्बा खाए और फ्लैट आउट फॉर लाइक 30 मिनट्स। रियली? ओहो, हम जाते खा लेते, फिर वहीं पे नीचे बैठने वाली दरी बिछाई हुई थी ना, और तकिए वकिए रखे हुए थे, वहीं पे दुम्बा खाते और वहीं पे लेट जाते, फिर जब उठते हैं ना फिर साथ कावा बाद में कि नहीं? ओहो कावा तो लाजमी, कावा पहले भी, कावा बाद में। कावा पहले इसलिए ताकि जो खाना है वो बैठ जाए, या फिर नहीं है वो भी बैठ जाए। हाँ, वो बैठ जाए बिकॉज़ चर्बी है ना, दुम्बा बेसिकली चर्बी है, हाई चर्बी कंटेंट है। हाँ, चर्बी तो आप अलग से लेते हो, डालते हो उसमें बनाते चर्बी। वही पठान अलग ब्रीड है। डू यू थिंक इंसान और पठान में फर्क है? बिल्कुल है ना, ये होना चाहिए जैसे मर्द और औरतों में है, इस तरफ इंसान और पठान में फर्क है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पठान पीपल? तो पठानों के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? जेन्युइनली बताएं। Yeah, I actually, as a race, I'm really I admire them. पहली बात तो ये, I think they've got पश्तून warrior race है ना, पहली बात तो ये है। एक तो I think they have like great loyalty. आप भरोसा कर सकते हैं, you know? पठान सही पख्तून पे। हाँ भाई, उन्हीं की बात कर रहे हैं, सही पख्तून पे, वो मिलावट वाले नहीं। और सही पठान वो जो पश्तो बोल सके, है ना? हाँ, ऐसा ही है ना? सही वाली पश्तो। और कौन सी सही वाली पश्तो? कौन सी? एक शप पश्तो, एक ख पश्तो। शप पश्तो वो क्या है? सही वाली। ठीक है, वो डिटेल पता चल जाता है यार जब आप बात करेंगे। हाँ, तो एक तो ये कि लॉयल्टी, इंटेग्रिटी है ना, और दूसरा ये है कि स्ट्रेंथ है पठान में। और चौथी चीज जो they know when to use it, yeah, exactly. और चौथी चीज ये है कि यार अल्लाह ने लुक्स भी दे दी हैं। As a race, they're beautiful people. So I think that matters as well. गुरूर भी नहीं करते। नहीं करते? अपनी तारीफ में सुनने के लिए नहीं बैठे होते हैं। नहीं कहाँ पे ऐसा सवाल नहीं पूछते जिससे उनकी तारीफें हो, ऐसे घुमा के नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, yeah, that is true, and I don't know why people think that बहुत ही कोई गुस्से वाले बहुत ये होते हैं गुस्से वाले, ठीक है, लेकिन I feel like बर्दाश्त उनमें बहुत होता है, जितना वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना, और आपको सिर्फ उनका गुस्सा नजर आ रहा होता है। आप अगर बोलते हो ना ये पठान ट्रक ड्राइवर है, इसका दिमाग घूम गया, सही जगह पे घूमा है, चपेट लगानी चाहिए तुम्हें, उसको देखो सही वो कहाँ से आ रहा है, क्या करके आ रहा है, क्या सोच क्या है, like he's going through a lot and I know I've seen them, man, the stuff that they do, और उसके बाद जब आप बोल रहे हो कि अच्छा ये गुस्से वाले हैं, तो बनता है उनका गुस्सा वाला, आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन I think they're very patient, they're very hard working people, all of the people are in general, लेकिन मैं जहाँ पे पढ़ा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, so they're very, ये क्लिप ना कर लेना, जब खुशहाल का रिश्ता कराना होगा ना तो ये वाला क्लिप भेजेंगे। ये वाला? हाँ ये वाला यार अभी कराई दे, कसम से कराई दें, आप बोले ना। अम्मी के लिए मैं भी मदद कर सकती हूँ रिश्ता ढूंढने में। हाँ आजकल मूसा के लिए भी ढूंढ रही हूँ। हाँ यू आर एक्चुअली। हाँ जो भी दो ढूंढे, ढूंढो, अम्मी को बोल दे दफा। लड़का कॉमा 23 साल, एक लड़की चाहिए, पठान लड़की नहीं, बताओ ना पठान। अच्छा मैं, हाँ, अच्छा आप मुझे आप तो क्या चाहिए? हाँ एक पठान लड़के को 23 साल है। हाँ 23 साल है पठान लड़के को, पुख्तून लड़का। हाँ उसको क्या चाहिए? हाँ अच्छा लोग पठान क्यों बोलते हैं? पठान इज लाइक तो क्या बोले? आप तो पंजाबी बोलते हैं नाम, राइट? लाइक यू से इट लाइक एज इट इज, लाइक ये इट्स लाइक तो ये तो पुख्तून है। पुख्तून ठीक है। मैं भी कभी-कभी ये बोल जाता हूं, आई डोंट लाइक इट व्हेन आई सी लुक बैक एट, आई एम लाइक नहीं यार पठान नहीं, पठान बोल सकते हैं लेकिन नहीं पुख्तून। ओके पठान फिल्म का नाम पुख्तून होता है, कितना मजा आ जाता है यार। नहीं अच्छा है ना, नहीं है, खराब नहीं किए। पुख्तून का नाम ने खराब किया ना, सही है पठान। पुख्तून इज द राइट वो। पुख्तून लड़का, पुख्तून। हाँ लड़की भी पुख्तून चाहिए या नहीं? पुख्तून पुश्तून दोनों हो सकते हैं। खैर लड़की जो है तो नहीं, जो भी हो। हाँ। So we are not bound to race. नहीं ठीक है। रेस का कुछ नहीं, इजी सीन है, चिल सीन है, गुड सीन है। तो चाहिए क्या फिर? अब मैं ढूंढ रही हूँ ना लड़कियां। लड़की चाहिए जो भी हो,
नहीं अब ऐसे तो नहीं ना। अच्छा क्या मतलब क्या किस किस्म की लड़की चाहिए? बाल वाल होने चाहिए, नाक वाक सही काम करनी चाहिए, स्मेल भी आनी चाहिए, दिखना नजर आनी यार चाहिए। ये बड़ी अजीब है, बाल बोले बाल ना होने बेशक। चाहिए, इसका क्या मतलब है? बाल बाल होने चाहिए, बोले बाल ना। बाल क्या होते हैं? नहीं बोले ना, बोले ना, अगर ये हो सकता है, ऑप्शनल है। मतलब क्या कह रहे, म्यूट बोले ना, या आगे से कहे जी जी खुशहाल जी, जो आपको मैं चाहे जी जी करे आगे से। नहीं फिर जी जी वाली क्या बोले मतलब? ना जी से क्या मतलब है? करे? बोले ना, ज्यादा ना बोले। चले बोल ले कभी कभी, खैर है, कोई मसला नहीं होता। कभी कभी वो ना अच्छा है, चले कर लेते हैं। ओके कैसी बातें बोले? should speak her अब mind। मैं उसमें प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बोले हैं, हाँ। you know, इसी पे आ जानी है ना, बोले ना, इसका क्या मतलब है बोले ना? प्यारी प्यारी बातें बोले हैं, अच्छी बातें, प्यार की बातें अच्छी बोले। बातें, पॉजिटिव ठीक है, बातें, ठीक है। गुड एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, ठीक है। जिसकी कंपनी में आप 24/7 भी रहना चाहो, रह सकते हो, आप रहना चाहो, ठीक है। you know, like it's a very old school वो, that's why I don't like really say it, because like होता है, लेकिन अब है तो क्या करें। हाँ चाहिए तो बेटा चाहिए, ऐसी and लड़की if you चाहिए। manifested you हाँ। can get it, Of course। लेकिन वक्त पे अगर if I'm like इतना हो गया अच्छा कि तो मतलब anyway वापस आओ, चलो बहुत अच्छा, you digress too much। 23 साला पख्तून को लड़की चाहिए, अच्छी हो दिखने में, बाल अच्छे हो, है ना, और बोले ना ज्यादा, बोल भी ले, खैर मसला नहीं, थोड़ा बहुत बोल ले। पश्तो में बोल रही हो तो इतना क्या ही मीठी बात है, है। ओए होए, ओए ओए। फिर तो मैं ना बोलूं, फिर तो मैं तो सुनूं, ओए होए होए। पश्तो बोले मैं सुनूं। ठीक है। हम्म। ठीक है। सुबह उठो तो वो कहे कि आपको रात को के सूरज निकले, वो के हाँ, आपको दिन को के रात होगी, वो के हाँ, ऐसी वाली चाहिए। नहीं, जब सुबह उठे और मैं कहूँ कि दिन हो गया, हाँ तो दिन तो हो गया ना, तो सुबह नहीं, बोले इसमें तो झूठ में क्या रात को बोलो कि दिन है अब। नहीं इतना, अभी ये भी मेरी वो है ना, तो अब कह ये रहे मैं ना क्यों बोलो ना, बोलूंगा? तो मैं कैसे? नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं क्यों अच्छा। बोलूंगा रात को दिन है, रात को रात सो जाओ आराम से, ठीक है। लेकिन सुबह जो है तो नहीं, ऐसी कोई डिमांड ऐसी नहीं, नहीं ऐसी है। कोई चीजें नहीं है। अच्छा ये खाना पकाना आ जाती हो, काम करती हो, मतलब वर्किंग गर्ल हो या क्या मतलब? घरेलू हो? कुछ भी करे, उसकी अपनी मर्जी है उसमें, तो ये मैं नहीं कहूंगा ना तुम घर पे बैठो या तुम काम करो। नहीं तो मैं If she wants it- पूछ रही हूँ यार, कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं यार हमें नहीं चाहिए, वी वांट अ देखिए मैं बताता हूँ, होम मेकर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, होम मेकर ऑफ कोर्स, हो। I want homemaker. हाँ। Okay, like I want to be that person as well. Like, when it comes to that point, कभी होगा नहीं होगा, पता नहीं, इस वक्त मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं वैसे एक जनरल वो दे रहा हूँ अपना ओपिनियन इस वक्त कि you know, like I think the thing that works the most is like love, trust, loyalty, and the most important thing out of all of them is respect. Like we spoke Now about. our conversation has beautifully come full circle। हमने शुरू भी बात में ये की थी, याद है? Yes, that's what I'm saying. Like you're good at interviews। आपसे सीखा है। अच्छा, जबरदस्त, ऐसे पहले full इंटरव्यू circle, आपके साथ ऐसे था full मेरा, circle ले आयो conversation है ना? को, जबरदस्त यार, love it। So I'm Love saying it। again, so I'm saying कि ये चीज बहुत important है मेरे लिए। हाँ। Like आपने कहा सीरियस, तो मैं सीरियसली जेन्युइनली जवाब दे रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर if I know I'm trusting this person, I can trust this person, I'm in love with this person, blah 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 blah, I'll be. Yeah, but what kind of a girl would you fall in love with? That makes me feel like that. That I can do all of these things. I can love her, trust her, respect her. ठीक है। I respect obviously, of course. That is वो तो मैं इसलिए नंबर 1 पे रखा कि वो होनी चाहिए हर of course, of course, वो हर रिश्ते में होनी चाहिए। बर्दाश्त इंसान में होना चाहिए। हाँ। I lack a lot of patience for some reason. I look at my father and I'm like, yeah, this guy. You know what? When you interview people and actors, right? Like when you're interviewing me and all that, like because I'm doing work and like I'm in the public eye. Let's just face it, right? Like yeah, होता है ना? है ऐसा ही है। Like you work, so you're known for that, right? But like the people behind this, like इस बंदे की कामयाबी, feel like एक होना चाहिए, उनका भी होने चाहिए। मेरी दादी बहुत क्यूट है, छोटी सी। हाँ। छोटी सी नहीं है, मतलब हाँ। she's very off. She has like green eyes and grayish eyes, and she's the most. She must have stories to tell. हाँ. She has amazing stories. हाँ. मुझे बुलाती है ना, प्यार से तो बहुत सारे नाम बुलाए, शहजादा बुलाती थी पहले, अब जो है तो कुछ और बुलाती है, और अब मेरे वो ड्रामे देखती है, और उनको ड्रामों की समझ कुछ नहीं आती, पश्तो की नहीं, उर्दू की इतनी नहीं आती ना, थोड़ी बहुत, तो शी वॉचेस इट, लाइक पहले जब आई थिंक ऑन एयर जब हो रहा होता है, फिर जब रिपीट हो रहा होता है, और फिर उनको पता है कि अच्छा आई थिंक मंडे को फिर से होता है ना, कोई सुबह के बीच में, कोई 9 बजे के बीच में चल रहा होता है, उनको पता है, मुझे नहीं पता, वो कहते मैं देख रही होती हूँ, और वो जिस तरह मतलब like a doll, like a little teddy bear, you know, you just want to like that. And वो जब stories बता रही, मुझे scenes बता रही होती है, तो ऐसे करके ऐसे बैठ गए, तुमने ये किया, फिर तुमने ये किया, फिर तुमने, and I just look at,
मैं बहुत वो लग रहा हूँ, but like the way she does it, yeah, you know, like how old people it's move, so and how loving. they Yeah, cute, yeah. like they do stuff like that in slow motion. It's very, I think it's adorable. So वो सारा वो देख रही होती है, and then she makes fun of it as well. She makes fun of me. Cute. वो प्यार से करती होंगी, हाँ. प्यार से करती है, but like she laughs in front of everyone. Recently I went and there was a scene in this drama and something, and she's like, तुम रो रहे थे, तुम्हारे मुंह से है निकल रहा था, मैंने कहा ऐसे करके मुझे ऐसे करके हाथ ही किया पूरा, और सब मेहमान बैठे हुए थे. ठीक है. ये था ना अभी इसमें MGM के एक सीन में. हाँ. तो उस पे उन्होंने मजाक क्या क्यों उड़ाया? क्यूट. उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे रोना भी आ गया. बड़ों के फिल्टर खत्म हो जाता है. I had the most loving and the most supporting family and mother That's it. who always pushed Not me. everybody does. Listen, आप कभी आए, मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है. I don't like, people don't know me that well in that. Thank you so much, you saved them for me. So you know, like, so they say privileged. I am privileged in a way. I got the most amazing parents in the world. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. They're my babies. And I would kill for them, for my brother, for my sister and all. I'm very protective about them. I can get very ugly when it comes to them, on a very serious note. So, take note. Yeah, take notes. But my mother, the way just small में she's like pushed me, it's amazing. Whoever's met my parents, whoever's met my parents, you should, I think. No, I'd love to meet your parents. Please. So guys, this was a fun conversation that we had. And hopefully you guys enjoyed it as well, right? Like, you must. समझ नहीं आई कि did you interview me or did I end up interviewing you? कुछ अजीब सा हो गया है ना, कुछ अजीब सा खिचड़ी सी. But it was fun though. Oh, we had fun. Tons of fun. Who cares? That's true. That's all. Who cares? Just subscribe and like and comment and share it and just watch it a couple of times. है ना? समझ आ जाएगी. एक बार ये इंसेप्शन है, एक दफा समझ नहीं आएगी, दो दफा. ये वो वाली कॉन्वर्सेशन है. अच्छी लगी मुझे. अच्छा लगा. आमना मैम जो है तो बहुत अच्छी, she was very kind and she was very candid in this interview and no tantrums and nothing like that, which I'm surprised. So thank you for being here. Thank you for coming here. I hope you liked your almonds, my almonds, these almonds. That are not no longer there. No longer there. कभी refill कर देते हैं. ठीक है. ये सारा आएगा ना? हाँ, of course. So, but thank you so much. Can I edit this interview as well? No. अच्छा ठीक है. Allah Hafiz.